Assalamu alaikum. Sorry for interruption. Actually, it happened just because of the disconnection, frequent disconnection of internet. So I'm resuming my lecture, resuming my discussion. So we were discussing the kinds of international law. First one is private international law, and the other one is public international law. Now, the private international law is a branch of international law which determines that which law is to be applied to a specific case containing foreign element. Examples of private international law includes family law matters, recognition of judgments, torts, contracts, etc. It is the body of conventions, model laws, national laws, legal guides, and other documents and instruments that regulate private relationships across national borders. अब ये दो ममालिक के बीच में जो इंडिविजुअल्स के ऊपर अगर कोई उनके बीच में इशू होता है, when there is an element of foreign law, when there is a foreign element, तब private international law के तहत that issue is to be resolved. And when it becomes difficult for a domestic court to decide that which law is applicable in a case where foreign element is involved. Let's say, for instance, I'm giving an example of European Union. Sorry for another disturbance. So we were discussing an example, an illustration of private international law. Let's suppose in case of a European Union, because it's a union of 27 countries, they are amalgamated, they have formulated their own currency, despite the fact that they have their separate currencies in each and every country, but most commonly they share one currency, which is named as euro. In case there is an agreement in between a party, in between a manufacturer, कोई party A जो है, they live in Germany, and party B is from Spain. They both enters into an agreement. Now, in breach of contract, the case is filed in Germany and the suit is decreed in favor of that party. Now, how this judgment would be effective in Spain on that other party? जब एक कोर्ट ने जजमेंट दे दिया जर्मनी में, तो स्पेन के आदमी के ऊपर स्पेन में कैसे इफेक्टिव होगा? Through private international law. So precisely, this law is applied to a specific case containing a foreign element. इसी तरीके से इंडिविजुअल्स के जो माबैन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कोर्ट्स की जो जजमेंट्स होती हैं, तो फैमिली मैटर्स होते हैं, तो उनमें ये प्राइवेट लॉ का अमल दखल होगा. Public international law, it's a body of legal rules which regulates the relation of states inter se as well as their relation with other non-state entities. State actors and non-state actors को हमने डिस्कस किया. तो public international law जो है वो regulate करता है relationship between the states, and private international law regulate करता है relationship between individuals in case there is a foreign element. Again, this is a definition.
Public international law is composed of the laws, rules, and principles of general application that deal with the conduct of nation states and international organizations among themselves, as well as the relationships between nation states and international organizations with persons, whether national or juridical. We have another explanation regarding private international law, which says that it's a branch of jurisprudence arising from the diverse laws of various nations that applies when private citizens of different countries interact or transact business with one another. जैसे हमने example अभी discuss किया. It refers to that part of the law that is administered between private citizens of different countries or is concerned with the definition, regulation, and enforcement of rights in situation where both the person in whom the right inherits and the person upon whom the obligation rests are private citizens of different nations. तो जहाँ पे प्राइवेट सिटीजन्स होंगे दो मुख्तलिफ कौमों के, दो मुख्तलिफ रियासतों के, उनके बीच में ड्यूटीज़ एंड राइट्स का कोई इशू आता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई लीगल बाइंडिंग्स हैं, तो यहाँ पे प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होगा whenever there is a foreign element. Now, what is the difference in between two? That private international law deals with the relationship of individual with one or two or more countries, whereas the public international law deals with the relationship of states with each other. अब ये दोनों में क्या थोड़े से differences हैं? We are very much precise because we are moving towards our subject, international humanitarian law. So these are the basic differences in between public international law and private international law. तो जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है वो क्या डील करता है? इंडिविजुअल्स को, दो या दो से ज़्यादा ममालिक के अगर कोई इंडिविजुअल्स हैं तो उनके बीच में. लेकिन जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है ये रेगुलेट करता है रिलेशनशिप रियासतों के मामले में. एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में जो रूल्स होते हैं दीज आर द आउटकम ऑफ स्टेट लॉज. एक रियासत के क्या कवानीन हैं और दूसरी रियासत उन कवानीन को क्या तस्लीम करती है या नहीं. एक रियासत की जो कोर्ट है उसकी डिक्री है क्या वो दूसरी रियासत पे इफेक्ट होगी या नहीं. सो दीज आर द आउटकम ऑफ स्टेट लॉज. वेयरएज इंटरनेशनल लॉ जो है उसका जो मेन सोर्स है ऑफ लेजिस्लेशन वो है कस्टम्स एंड ट्रीटीज़, जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में ममालिक आपस में मुआहदे करते हैं, तहरीरी जिनकी तस्दीक करते हैं, दस्तखत करते हैं मुफाहमत से, रजामंदी से. यहाँ से वो सोर्स है जहाँ से इंटरनेशनल लॉ बनता है और ये तमाम रियासतों के लिए एक जैसा होता है. लेकिन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ डिफरेंट होता है. एक रियासत से दूसरी रियासत के इंडिविजुअल्स के माबैन अगर कोई ताल्लुकात हैं, अगर कोई ट्रीटीज़ हैं, अगर कोई उनके अंदर कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग है तो वो डिफर होती है स्टेट टू स्टेट. लेकिन इंटरनेशनल लॉ इज सेम फॉर ऑल द स्टेट्स. वी डू नॉट हैव एनी ट्रीटी विद इंडिया. वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट आवर जजमेंट इनटू इंडियन सिटीज. लाइक आज भी हमने अगर केस सुना तो कुलभूषण यादव का जो केस है वहाँ से अगर कोई इंडिया का वकील आएगा तो यहाँ नहीं चला सकता. वी डू नॉट हैव एनी ट्रीटी, वी डू नॉट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग, वी डू नॉट हैव एनी रिलेशनशिप. But in international law, when we sign a treaty, when we sign an agreement with the country, both the states are bound. और ये इनकी जो इन्फोर्समेंट है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की, ये कस्टम्स एंड ट्रीटीज़ के थ्रू होती है, या जो आर्बिट्रेटरी ट्राइब्यूनल्स होते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जजमेंट्स होते हैं इनके थ्रू. लेकिन जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है ये लेजिस्लेचर के थ्रू इन्फोर्स होता है.
Okay, sources of international law. We discussed that sources of international law are treaties and customs. Now, what do we mean by treaty? It's an agreement entered into by nation states for their relation with each other and undertake certain duties, obligation and rights. दो ममालिक के बीच में, दो से ज़्यादा ममालिक के बीच में, दो या दो से ज़्यादा, उनके बीच में अगर कोई माहिदा तय पाया जाता है जिसमें वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे दस्तखत करते हैं, उनकी तस्दीक करते हैं कि ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारे राइट्स है, तो वो माहिदा ट्रीटी कहलाया जाएगा. और कस्टम जो है, दीज आर द हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस which the nations states commonly observe and the violation of which is considered as against the courtesy of international behavior. Civilized nation behave in a particular manner. Civilized states behave in a responsible manner. तो ये वो हैबिट्स एंड कस्टम्स हैं, वो आदतें जो रियासतें किसी मखसूस अंदाज में बिहेव करती हैं, और अगर उन कस्टम्स को वायोलेट किया जाए तो वो इंटरनेशनल बिहेवियर की खिलाफ वर्जी होती है. नाउ ये इंटरनेशनल लॉ किस तरह रिकॉग्नाइज होता है? नंबर वन, एक तो इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन होती है. एवरी सिविलाइज्ड सिटीजन, एवरी सिविलाइज्ड स्टेट रिकॉग्नाइज इट. नंबर टू, जुडिशियल डिसीजन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो डिसीजंस हैं यूजुअली दे आर नॉट बाइंडिंग इन स्ट्रिक्टो सेंसो, सख्ती से तो वो बाइंडिंग नहीं होती, बट in absence of any law, in absence of any other source, these judgments and decisions can be referred. Juristic work, international law का एक main source है, जहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं होती in absence of any reference, तो जो jurist हैं, जो philosophers हैं, कानूनदान हैं, जो तहकीकदान हैं, उनका जो opinion है, उनसे भी ये references लेते हैं. दूसरे जो सोर्सेज हैं उसमें इंटरनेशनल जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं सच एज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस और उसके जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, दे वर्क ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड सबमिट देयर रिपोर्ट्स. सो इन द लाइट ऑफ देयर रिपोर्ट्स एंड इन द लाइट ऑफ देयर रेजोल्यूशन दे सॉल्व देयर इश्यूज. बिकॉज इन द लाइट ऑफ resolutions passed by United Nations, normally the court feels it that they are morally duty bound to decide a particular matter in the light of a particular resolution forwarded by United Nations. Now, who are the subject of this international law? There are different theories pertaining to the subjugation of these international law के कौन-कौन से subject हैं जिसके ऊपर ये impact करता है. तो एक realist theory है जिनका ये मानना है कि जो सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है वो सिर्फ नेशन और स्टेट्स हैं, इंडिविजुअल के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है. बिकॉज इंटरनेशनल सोसाइटी में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में स्टेट्स बिहेव करती हैं, इंडिविजुअल्स बिहेव नहीं करते. लेकिन एक और थ्योरी है फिक्शनल थ्योरी, जिनका ये मानना है कि इंटरनेशनल लॉ का जो सब्जेक्ट वो इंडिविजुअल्स हैं, स्टेट्स नहीं हैं. स्टेट्स आर द आउटकम ऑफ इंडिविजुअल्स. तो जो रियासतें हैं उनको भी इनडायरेक्ट इंडिविजुअल्स ही चला रहे हैं. सो द इंडिविजुअल्स आर द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ. फंक्शनल थ्योरी है, दे बिलीव इन बोथ. ये थोड़े मॉडर्न हैं. बोथ द रियलिस्ट एंड फिक्शनल आर एक्सट्रीमिस्ट, बट द फंक्शनल थ्योरी है, इनका ये मानना है कि जो इंडिविजुअल और स्टेट्स बोथ आर द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ. एक को उन्होंने प्राइवेट में कर दिया, दूसरों को उन्होंने पब्लिक में कर दिया. What are the main functions of international law? To create peace in the world, to establish friendly relationship among the states, to enhance and increase the international cooperation among the entire states and nations, to solve the economic problems of the states, and to have the sovereignty of the states, that the states must remain sovereign and their integrity shall not be called into any question. Now, these are the functions of international law. Now, what are the sanctions of international law? Sanctioned by states and collective sanctions. कौन-कौन सी पाबंदियां हैं? वैसे हमारा मानना है कि जब whenever जब लॉ को कोई भी तोड़ेगा, नहीं मानेगा, उसको सजा मिलती है, sanctions मिलते हैं. Now, what are the sanctions of international law? एक है आपका sanction by state and दूसरा है आपका collective sanction.
Now, what do we mean by sanctions by a state? Under this international law, if a right of a state is infringed or violated by a wrongdoing of a state, एक रियासत अगर एग्रेसिव होती है दूसरी रियासत की कोई हक तलफी करती है तो the aggrieved has a right to depend upon its rights and to avoid aggressor from violating such right. And in order to put sanction, the aggrieved state can put certain sanction कि जिनसे ट्रेड नहीं करेंगे, इनके वीज़ा नहीं लगेंगे, हम इनके साथ फ़ज़ाई ताल्लुकात ख़त्म करते हैं, दिफाई ताल्लुकात ख़त्म करते हैं, डिप्लोमेटिक टाइज ख़त्म करते हैं. So these are the sanctions put by the particular state. अब अगर उस रियासत के साथ और भी इंटरनेशनल कम्युनिटी मिल जाती है तो it is known as collective sanction. Because in case of violation of an international right or non-performance of an international duty by any of the state, collective measures may also be taken by other member states under United Nations organizations. अब वो सैंक्शन कौन कौन से जो कलेक्टिव लगा सकते हैं? इकोनॉमिक हैं, फाइनेंशियल्स हैं और मिलिट्री सैंक्शंस हैं. We have seen Iran is facing strict economic, military and financial sanctions. The other important topic is the United Nations organization. We have already discussed that after the failure of League of Nations and at the end of World War II, the states started acting responsibly. In 1945, they established an organization named as United Nations Organization. Initially, they had 51 member states, and subsequently, the membership increased, and presently, it has 193 members. Now, what is the main purpose of this organization? To keep peace throughout the world and to develop friendly relationship among the nations. And third, to help nations work together to improve the lives of poor people and also to conquer hunger, disease, illiteracy, and to encourage respect for each other's rights and duties and ensure freedom. The other one is that United Nations organization wanted to be the center for harmonizing the actions of nation to achieve these goals. Now, organs of United Nations. First is General Assembly, in which all the member states are members. And around the year, they call their meetings. And presently, the General Assembly is being revitalized. It is being reformed. The second one is Security Council, the most strongest organ of United Nations organization, whereby 5 members have got the veto power and they are the permanent members of Security Council and 10 members are temporary. The third one is Economic and Social Economic Council, ECOSOC. The main function of this council, it was established under the United Nations Charter. The main aim and function of this council is to coordinate the economic, social, and related work of United Nations and the specialized agency and the institutions. Every member has one vote in this council. The other one is International Court of Justice. This
International Court of Justice is located at Hague, Netherlands में है जी, and it is the principal judicial organ of UNO. It settles legal disputes between states and gives advisory opinion to the United Nations and its specialized agencies. Its statute is an integral part of United Nations Charter. I hope you have gone through with this entire public and private international law, their functions, and United Nations organization in your previous classes, previous semesters. I'm just trying to repeat and revise these topics. The last one is Secretariat. It is the office, it is established in New York for the performance of day-to-day tasks. Well, thank you very much. These were the brief and basic concepts which were related with the international law. Our next topic is international humanitarian law. It's a law of war. उसके ऊपर हम बात करेंगे. ये हमने बहुत ही मुख्तसर सा और बहुत ही प्रिसाइज वे में इंटरनेशनल लॉ को देखा एंड यूएनओ को देखा. इस बारे में कोई भी आपके पास सवाल हो, you may ask your question, you may submit your query in case, and you are always free to ask your question. Hope to see you in our next discussion, which will be based upon the international humanitarian law. Thank you very much.